I am Mamta Nikam and welcome back to my YouTube channel. आज मैं आई हूँ है एक नए टॉपिक के साथ दैट इज इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिसेस की सीरीज में हमने कुछ टॉपिक्स देख लिए हैं, पहले भी अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस ट्रांसपोज। आज हम देखने वाले हैं इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। ओके, चलो फिर शुरू करते हैं। सो बेस डेफिनेशन क्या कहता है? सपोज ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स of order n, some order n का एक square matrix है। now note down it is a basically a square matrix पे हम define करते हैं और square matrix का ही inverse निकाल सकते हैं। okay, so if A is a square matrix of order n and there exists another square matrix B of same order such that A into B, or you can say B into A, both equal, is equal to identity matrix, or you can say unit matrix, then this B term is known as inverse of matrix A. Okay, so अगर दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट दिया जाए और वो हमें अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है तो हम कहते हैं कि एक मैट्रिक्स उस दूसरे मैट्रिक्स का क्या होता है? इनवर्स होता है। एंड हाउ डू वी डिनोट इट एज? वी डिनोट इट इनवर्स एज a to the power -1, a inverse. ओके, वी कॉल इट एज a inverse. so इस b के जगह हम क्या लिख सकते हैं? a inverse भी लिख सकते हैं because b is what? It is inverse of this matrix A. So therefore we have a term as A into A inverse is equal to A inverse into A, which is equal to identity. Okay, so basically inverse exist कब होता है? जब एक मैट्रिक्स इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगा तो ही इन्वर्स एग्जिस्ट होता है, अदरवाइज इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं होता। ठीक है, okay. Let's discuss an important relation between a matrix and its adjoint. Now, why are we discussing it here? Because it is necessary for us to define inverse matrix, or you can say to define a formula for inverse of a matrix. Okay. So, what is that relation says? The relation says if A is a square matrix of order n and I is a unit matrix of same order, then A into A adjoint of A, or you can say adjoint of A into A, is equal to determinant of A into I. Okay, now we all know what is adjoint. adjoint क्या होता है? क्या पता, हमें पता है adjoint of a matrix कैसे फाइंड आउट किया जाता है। हमें पता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, और ट्रांसपोज को हम का मैट्रिक्स से हम क्या निकाल सकते हैं? सॉरी, कोफैक्टर मैट्रिक्स हमें पता है। कोफैक्टर मैट्रिक्स का जब हम ट्रांसपोज लेते हैं तो हमें मिलता है वो एडजॉइंट मैट्रिक्स। करेक्ट। सो यहाँ पे A into adjoint of A, or adjoint of A into A is equals to determinant of A. Now remember this property, it is very important. Okay, so इसका यूज हम क्या करने वाले हैं? आगे एक रिलेशन प्रूव करने के लिए यूज करने वाले, और यू कैन से फॉर्मूला फाइंड कर दी। सो लेट्स मूव ऑन फर्दर। मूविंग ऑन फर्दर, how do we define an inverse of a matrix in terms of adjoint? So now we know if A is an invertible matrix, A into A inverse is equal to A inverse into A is equal to identity. By definition, just now we have discussed, and also we know, or we have a relation between A into adjoint of A as A into adjoint of A is equal to adjoint of A into A, which is equal to determinant of A into I. So ये relation है। इस relation से हम क्या लिख सकते हैं? Suppose I shift this determinant term. Okay, तो shift करोगे तो क्या हो जाएगा? A into adjoint of A upon determinant of A. यहाँ पे भी वो डिटर्मिनेंट डिनोमिनेटर में आ जाएगा, adjoint of A upon determinant of A into A equals to identity. So now if you observe, say this is equation 1 from the definition of inverse, and this is equation 2 which we have observed. So this is, both the terms are equal to identity, so we can relate these two terms from equation 1 and 2. हमें क्या मिल जाएगा? एक इक्वेशन मिलेगा as A into A inverse is equal to A into adjoint of A upon determinant of, or you have you can have a relation as A inverse into A equals to adjoint of A upon determinant of A into A.
बोथ साइड्स पे a कॉमन है वो कैंसिल हो जाएगा, सो हमें एक रिलेशन मिल जाएगा A इनवर्स इक्वल्स टू adjoint of A upon determinant of A. So this is a formula for A inverse in terms of adjoint. So जब भी हमें example दिए जाएंगे where we are supposed to find A inverse, we will be using this formula to find inverse, that is adjoint of A upon determinant of A. Okay, अगर determinant of A की value 0 आती है तो हमें inverse नहीं मिलेगा. Okay, अगर determinant of A नॉन जीरो है तो ही हम इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, लेट्स मूव ऑन. लेट अस डिस्कस अ थ्योरम which says the necessary and sufficient condition for a square matrix to be invertible is that A is a non-singular matrix, that is determinant of A is not equal to 0. अभी मैंने बताया था कि अगर A इनवर्स फाइंड आउट करना है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या चाहिए, हमेशा नॉन जीरो चाहिए. अगर जीरो होगी तो इनवर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते. वही यहाँ पे हम प्रूव करके देखेंगे. Okay, so we will first discuss the necessary condition and then the sufficient condition. Okay, so for necessary condition, let us assume given a square matrix A is invertible. Okay, let us assume it, and suppose B is its inverse. फाइन, हमने क्या कंसिडर किया, एक इनवर्स मैट्रिक्स दिया है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स दिया है और B उसका इनवर्स है. तो हमें डेफिनेशन से पता है, by definition what do we know? By definition we know A into B is equals to identity. Suppose we take determinant on both sides. Taking determinant on both sides, क्या होगा, ये होगा determinant of A into B equals to I, determinant of I, or you can write it as determinant of A into determinant of B equals to identity. But when is this possible? अगर इनमें से एक भी जीरो हो गया, इनमें से एक भी जीरो हो गया तो ये आइडेंटिटी हो जाएगा क्या? नहीं, ये जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा, ये टोटली जीरो होगा. तो ये पॉसिबल कब है, जब नीदर ऑफ दिस A or determinant of A or determinant of B is zero. So it is possible only if neither of determinant of A and determinant of B is 0. Means what? This both matrix A, B are non-singular. And hence we can say that determinant of A is not equal to 0 when we have a invertible matrix. Okay, and if A is an invertible matrix, determinant of A हमेशा क्या आता है, नॉन जीरो होता है. Okay, now let's check with the sufficient condition. उल्टा देखते हैं प्रूव करके. So for sufficient condition, please ignore my handwriting. For sufficient condition, let us assume that determinant of A is not equal to 0. ये हम assume करते हैं, and there exists a matrix B such that B is equals to 1 upon determinant of A into adjoint of A. ये हम assume करते हैं. Okay, now let us multiply by A on the left hand side of this equation. So क्या हो जाएगा, if we multiply by A on left of
इक्वेशन स्टार यू कैन से, तो ये होगा a इंटू बी इक्वल्स टू a इंटू 1/डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू adjoint of a, right? So we can write this as a b equals to 1/determinant of a into a into sorry a into adjoint of a, and we have just discussed a relation. We have a relation which says if a into adjoint of a क्या होता है, determinant of a into I, right? Yes or no? So we can express this equation as, we can write down this equation as ab equals to 1/determinant into determinant of a into I. ये determinant cancel हो जाएगा और बचेगा क्या, ab is equals to I, right? Similarly अगर a हमने right hand side पे multiply किया होता तो हमें क्या मिलता, हमें equation मिलता as b into a equals to I. Means what, we can say ab is equals to ba is equals to identity, and we know by definition if this is proved, this equation is proved, this term is equality is proved, हमें क्या पता होता है, a क्या होता है, a has an inverse, or you can say a is an invertible matrix, right? So this proves a theorem. मीन्स हमने पहले पार्ट में अज्यूम कर लिया कि ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है और ये डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आता है, ये नहीं चेक किया, और दूसरे पार्ट में हमने डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, सॉरी डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आता है, ये नहीं चेक किया, दूसरे पार्ट में डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है क्या नहीं ये देख लिया, और प्रूव कर लिया कि एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है या नहीं. सो इसके जब भी हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे इनवर्स का, दैट इज 1/determinant of a into adjoint of a. ओके, ये था आज का टॉपिक वेयर वी हैव डिस्कस्ड बेसिक डेफिनेशन ऑफ इनवर्स क्या होता है और इनवर्स की फॉर्मूला क्या होती है, वो फॉर्मूला कैसे आ गई उसका प्रूफ हमने देख लिया. ये था आज के वीडियो के लिए. अगले वीडियो में हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स क्या होता है. तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ. तब तक के लिए प्लीज टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल. थैंक यू.